गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रोटैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस सेकेंड मॉड्यूल के अंदर ऑफ मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर दैट यू कैन से मिक्सचर एंड एलिगेशन is a very important part of the application of ratio and proportion. The students who are master at ratio proportion, master at the concept of average, they will be good at mixture and allegation. Today I'm going to solve a lot of questions for you. ठीक है, initially I'll be solving some around 4 to 5 questions. I'm going to explain the concepts behind mixture and allegation, and based on that we will be moving forward and giving you some more practice questions. Yes or no दोस्तों? चलिए फटाफट आपका स्वागत है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आपका नाम बता दीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट, सो दैट इट टर्न्स आउट टू बी इजी। दिस मिक्सचर एंड एलिगेशन विल बी वेरी यूजफुल टू यू फॉर योर IIM, IPM, NMIMS, Symbiosis, Christ, ठीक है, any other BBA entrance examination, or even for that matter, it is very useful concept for law entrance examination, hotel management entrance examination, and whatever. Okay, so whichever you wish to prepare, you will be in a position to work on it. Okay, great. Hello Mehak, hello Rutwa, hello Janvi, hello Umang, Ishita, Agam, Janshi, Vaibhav, उमंग खांडेलवाल, ग्रेट, आप सबका स्वागत है दोस्तों। चलिए चालू करिए, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मजेदार सी लड़ाई है, इजी कंसेप्ट है। सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि हमने क्या कंसेप्ट सीखे थे। हमने सीखे थे वेटेड एवरेज। व्हाट इज द लर्निंग वी हैड फॉर अ वेटेड एवरेज? वी अंडरस्टूड दैट for a particular, let's say, quantity Q1, the average was A1. For a quantity Q2, the average was A2. So what is an overall average? So weighted average says A1 into Q1 plus A2 into Q2 divided by Q1 plus Q2. This is how it is done. So if it is an average और उस एवरेज का मुझे एवरेज करना है, I have to go by this particular method. Yes or no? Great. So that's the first thing we learned. Okay. At the same time, we also learned very interesting part कि same fundamental को we can work with the ratio. We converted this idea into quantity of cheaper upon quantity of dearer is equal to price of dearer minus price of mean upon price of mean minus price of cheaper. Yes or no? This is what we understood. This is what we learned. हमने इसको क्रिस क्रॉस मेथड देखा था। हमने देखा था प्राइस ऑफ डियरर, प्राइस ऑफ चीपर, ये दो आएंगे विच इज कॉल्ड प्राइस ऑफ मीन. सो व्हाट डू यू गेट इज PD minus PM refers to QC, and this is PM minus PC that refers to QD. So it is a ratio, है ना? You can convert that into a ratio. Okay, I hope it is very clear. Great. So ये weighted average का रेशियो हमने सीखा था। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. Okay, so we have a question number 1 which is about speed. Okay, so Arjun goes from Delhi to Agra at a constant speed of 60 km per hour. So to tell you one very important part, that speed, okay, so which is coming from Delhi to Agra, whenever we talk about a speed, that speed is an average speed. Yes or no? Speed is an average speed. Okay, so that's an average. Okay, so that's an average. So someone is going from Delhi to Agra at the speed of 60 km per hour, and from Agra to Jaipur at a speed of 80 km per hour. The overall average speed for Arjun comes out to be 65 km per hour. Okay, what is the ratio of time taken to travel this respective distances? ठीक है दोस्तों, अब हमें यह पता होना चाहिए कि उनका डिस्टेंस क्या है. We don't know the distance, so let us assume the distance here is D1, here is distance D2. Okay, ठीक है. So we all understand if the distance is D1, okay, distance is D1, and when we divide it by 60, okay, D1 by 60, so what do I get? Time taken. So that is T1. Okay, time taken from moving from Delhi to Agra is D1 by 60. Time taken from Agra to Jaipur is D2 by 80. These are time taken. Okay, ये क्या है?
time taken individually. Okay, whenever we have to find out, you can say ratio of time taken to travel this respective distance. Okay, so this is what the ratio will come. Now this ratio is dependent on d1 and d2. So we have to find out what is d1 and d2. How do I find out that? Okay, so I know that my average speed is 65. So what is my average speed? Total distance traveled, which is d1 plus d2 upon total time taken. That is what my average speed of 65. Is that okay with everyone? सबको ये बात समझ में आ रही है? Very good. So when I have d1 plus d2, I don't know what is that value, but I know what is the total time taken, which is called d1 upon 60 plus d2 upon 80 is equal to 65. Okay, so that is one information which I am aware about. Okay, so you understand that you can't get a solution to this equation because this is one equation and you have two variables, but you can find out ratio. Okay, you can find out a ratio of d1 by d2. That is possible. Yes or no? You can't find out the exact value, what is d1 and d2, but you can find out a ratio. Yes or no? Is that comfortable for everyone? सबको बात समझ में आ रही है ये? Great. ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है. Okay, so what is happening for me is d1 plus d2. So I'm just converting this equation by 65 is equal to d1 by 60 plus d2 by 80. So this becomes d1 by 65 plus d2 by 65 is equal to d1 by 60 plus d2 by 60. Is that okay with everyone? सबको ये बात समझ में आ रही है? Yes or no? कोई भी मन में दिक्कत हो तो बताइए. Now मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मेरा कैलकुलेशन मुझे इजी पड़े. So I convert this into d1 by 60, d1 by 65 is equal to you can say d2 by 60 minus d2 by this is 80. Okay, so d2 by 65 minus d2 by 80. Okay, is that okay? काफी easy है. Okay, so from this I can find out d1 by d2 का ratio. Is that okay? चलिए जल्दी करके बताइए क्या आंसर होगा. d1 by d2 का रेशियो है ना, फटाफट बताइए जल्दी. d1 by d2 का रेशियो क्या होगा? मैं यहाँ से d1 कॉमन निकाल दूं. ओके, ठीक है, यहाँ से मैं d2 कॉमन निकाल दूं. सो व्हाट इज माय रेशियो? 1 by 65 minus 1 by 80 upon 1 by 60 minus 1 by 65. ओके, अब आप देख सकते हैं कि एलसीएम हो जाएगा आपका 80 और 65. सो ऊपर आएगा आपका 80 minus 65 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 80 और नीचे होगा आपका 65 माइनस 60 और ऊपर जाएगा आपका 65 इंटू 60. 65 चला गया. सो व्हाट डू आई गेट इज d1 बाई d2 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 65 माइनस 80 दैट विल बी सम अराउंड 15 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 5. 5 3s are okay, so this is 3 and this is 4. So what is the ratio? 9:4. So what is the question? The question number 2 is what is the ratio of distance? It is 9:4. Very good, Mahek. I'm very happy that you are able to get it. Very good. So ratio of distance is 9:4. What is the ratio of time travel? So we know the ratio of time travel was d1 by 60 is to d2 by 80. Okay, so in a way it is known as d1 by d2 into 80 by 60. So d1 by d2 is 9 by 4 and this is 8 by 6. 4 2s are 2 3s are 3 3s are. So the ratio is 3:1. Okay, what is the ratio? 3:1. Is that okay? समझ आ रहा है सबको? दोस्तों हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? We are trying to understand that speed is a concept of average. Speed is a concept of average. Okay, so when I am going from Delhi to Agra, my speed is 60. From Agra to Jaipur,
my speed is 80. For overall journey, I took 65 kilometer per hour. That's my average speed. So how do I get my average speed? My average speed is given as total distance traveled upon total time taken. Okay, so when I set my average speed, which is 65 kilometer per hour, so my total distance is, you can say, I don't know what is that distance is, so I say d1 by d2. What is the total time taken? It is d1 by 60 plus d2 by 80. These are my total time taken. Okay, so from this, you can say calculation, I can find out the ratio of d1 by d2. That is a ratio I can find out. I got that to be 9:4. Okay, and then they asked me what is the ratio of time taken by both of them. Time taken was d1 upon 60 is to d2 upon 80. ये रेशियो मुझे चाहिए था. So if I know d1 is to d2, I can find out that. Okay, so दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, whenever you have a speed provided, okay, whenever you have a speed provided and you have to do average of it, so average of speed can be done by only this method. There is no other method available. Okay, there is no method available apart from this, that is total distance travel upon total time taken. In another way, if I tell you that, let's say if I am going from A to B at a speed of S1, and if I am coming from B to A with a speed of S2, what is my average speed? Okay, what is my average speed? My average speed in this particular method would be same tarika. Average speed is equal to total distance traveled upon total time taken. So what is a total distance travel? I don't know that, so I'm assuming it to be, let us say A to B जाने का रास्ता is a D है, तो आने का भी D होगा, so total distance is 2D. Okay, what is the time taken? Time taken is A to B जाने के लिए D upon S1 और B to A वापस आने के लिए it is D upon S2. Okay, so my average speed मैं DD अगर निकाल दूं, so what do I get is 2 upon 1 upon S1 plus 1 upon S2. Now this is quicker method, provided your distance remains constant. Now what is this? This is known as harmonic mean. Okay, क्या बोलते हैं इसको? Harmonic mean. Okay, so Umang, we will not go at a very quick pace to harmonic mean. पहले हम यही old method से थोड़े questions करेंगे and then we will try and see can we find out a quicker method or not. But we understood this very interesting part, that how do we find out average speed. Is that okay with everyone? सबको बात समझ में आई? You can note down this, है ना, ये formula which is 2s1 s2 upon s1 plus s2. This is how the idea is. Yes or no? ठीक है. Umang says, sir, can we take LCM of both speeds to get the total distance? You can possibly take the LCM of both the speed and assume that could be a distance. ठीक है. That is possible, but you understand here the problem was दिल्ली टू आगरा का अलग डिस्टेंस था और आगरा टू जयपुर अलग डिस्टेंस था. So that way it turns out to be reasonably challenging. Okay, चलिए, great. I hope it is very clear. Great. Question number 2. वापस देखते हैं इसको. When there are two mixtures of cement and sand, so there is a mixture number 1 and there is mixture number 2. They having cement and sand का ratio is 3:2. This is cement is to sand का ratio 7:3. We mix them and the ratio becomes 2:1. What is the ratio in which the available mixture to be mixed up to get the desired ratio? Okay, so we need desired ratio. ठीक है. To apply क्रिस क्रॉस मेथड जो हमने सीखा था, ठीक है, उसके लिए आइडियल तरीका इज डोंट कीप सीमेंट इज टू सैंड का रेशियो, कन्वर्ट दैट इनटू सीमेंट अपॉन टोटल का रेशियो, सीमेंट अपॉन टोटल का रेशियो, ठीक है, विच इज 3/5, दिस इज 7/10, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे एंड आई गेट 2/3. ओके, सो आई कैन अप्लाई दिस नाउ, है ना, 3/5 माइनस 2/3, है ना, सो दिस इज 2/3 minus 3/5. ओके, क्या होगा ये
5 2s are 10 and 3 3s are 9, 1 by 15. So this is 1 by 15. ठीक है, and this is 7 by 10 minus 2 by 3. Okay, so this becomes 21 minus 20. So this is 1 by 30. क्या रेशियो होगा? 1 by 30 is to 1 by 15. Okay, which is nothing but 1 is to 2 का रेशियो. So this is 1 is to 2 का रेशियो. मतलब इसका 1 पार्ट और इसके 2 पार्ट में मिक्स करना चाहिए. आंसर आएगा 1 is to 2. Is this clear to everyone? ये मेथड समझ में आई आपको? क्रिस क्रॉस. ठीक है, इज दैट ओके? से यस और नो. I'll wait for it. I'll see how many of you are able to get this. Rishik, are you able to understand this? All of you are getting this? Umang got it, very good. Rishik, did you get this? Let me repeat this method one more time, okay, so that all of you are very comfortable. You have a mixture number 1, you have mixture number 2. Mixture is mixed at 3 is to 2. Okay, this is 7 is to 3. Okay, and we are mixing them and we are getting 2 is to 1. Okay, so I can do this mixture 1, mixture 2, convert that into cement is to total, which is 3 is to 5, 7 is to 10. इन दोनों को मिक्स करेंगे, we get 2 by 3. Okay, so what is this value? ये आएगा आपका 2 by 3 minus 3 by 5, and this is 7 by 10 minus 2 by 3. The value of this is 1 by 15. The value of this is 1 by 30. So what is the ratio? Ratio is 1 is to 2. Is that okay with everyone? ठीक है, मैं ये मेथड भी कर सकता था, quantity of cheaper upon quantity of dearer. Now to do that, I have to still go by this method only. Cement upon total, cement upon total. Look, this is 60%, this is 70%, this is 66.66%. Yes or no? So this is dearer, this is cheaper. So this is dearer minus mean upon mean minus cheaper. So this is the ratio I'm interested in. Okay, so this is 1 by 30 is to, you can say 1 by 15. So this is giving us 1 is to 2 का ratio. Is this okay with everyone? मैं ये method से भी कर सकता था, quantity of cheaper upon quantity of dearer. I am able to do this by criss cross वाला method. ठीक है, I believe that is easy for every one of us to be very clear about. Say yes or no. Are you comfortable with this? Say yes or no fast. महक, वेदांत, जन्म, उमंग खांडेलवाल, वैभव, जेंशी, इशिता, जानवी, रुतवा, ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल? उमंग खांडेलवाल बोलते हैं 2 is to 1 आएगा. नहीं, उमंग रेशियो पूछा था इन्होंने इन मिक्सचर्स का, M1 और M2 का, यही पूछा था. 3 is to 2 और 7 is to 3 का. इनका क्या रेशियो होगा? वो होगा 1 is to 2. सही है? कंफर्टेबल है? वेरी गुड. बढ़े आगे. ओके, वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3. वापस सेम तरीके का. देखिए, इफ 2 वेराइटीज ऑफ शुगर, शुगर वेराइटी 1, शुगर वेराइटी 2, which are costing at 8 rupees per kg and 13 rupees per kg are mixed in the ratio of 4 is to 5. What is the cost price of resultant variety? So we know quantity of cheaper upon quantity of dearer. ठीक है, so I know ये 8 rupees का है, तो ये cheaper है, तो इसका पार्ट 4 है. dearer ये है, so ये हो गया आपका 5 का पार्ट, is equal to 13 minus mean upon mean minus cheaper. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 4m minus 32 is equal to 65 minus 5m. So I get 9m is equal to 76397. So that means m is equal to 97 by 9. That's a mean value.
ओके, दैट्स अ मीन वैल्यू विच विल बी सम अराउंड, यू कैन से कितना आना चाहिए, ये चला जाएगा आपका यू कैन से 17 पॉइंट समथिंग के आजू बाजू कुछ जाना चाहिए. ठीक है, आई थिंक दिस इज इजी, कंफर्टेबल है सबको. व्हाट इज द मीन वैल्यू? 97/9. ये आपका आंसर होना चाहिए. इज दैट ओके? से यस और नो? से यस और नो. बहुत इजी है. All of you understood this? Say yes or no. Very good. मैं got it. Very good. Let me do it one more time. है ना? चलिए वापस देखते हैं. Two varieties of rice, rice 1 and rice 2. This is available at 10 rupees per kg. This is available at 18 rupees per kg. And I'm mixing them and I'm selling at 20 rupees per kg. अब आप देखिए कि कोई 10 रुपए की चीज़ है और कोई 18 रुपए की चीज़ है, मैं उन दोनों को मिक्स करूंगा तो उनका जो एक एवरेज वैल्यू होगा वो कभी भी 18 के ऊपर और 10 के नीचे तो होगा नहीं. ये सनो, ये तो 20 हो रहा है, वो तो सरासर नाइंसाफी है, ये तो हो ही नहीं सकता. ये सनो, ये तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए. दे सेड इट इज सोल्ड एट 20 पर केजी, देयरबाय गेनिंग 66%. ओ, अब समझ में आया कि अच्छा 20 रुपए पे बेच के हमको कितना प्रॉफिट हुआ? 66%, विच इज 2/3 का प्रॉफिट हुआ, विच इज नथिंग बट 5/3 of cost price is equal to 20. So my cost price is equal to 20 into 3/5. 5 4s are, so this is 12. So my mean value is 12. ठीक है, इन दोनों को क्या रेशियो में मिक्स करना चाहिए? This is 2 and this is 18 minus 12 is 6. So this gives me 3:2. So इनको 3:1 के रेशियो में मुझे मिक्स करना चाहिए. Is this okay? पक्का? मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये जगह पे फंस गए होंगे, ये इतना जल्दी आप नहीं कर पाए होंगे. और ये मेरा मानना है कि ये वो बच्चे जो अगर ये तेजी से कर पाएंगे, दे हैव फ्यूचर, दे हैव अ गुड स्कोर टू बी मेड. नहीं समझ में आया? आई विल एक्सप्लेन. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. दिस इज अ टाइम टू अंडरस्टैंड इट, बट डू द स्पीड, डू एट मतलब डेवलप अ मास्टरी एट दिस. इज दिस कंफर्टेबल? कोई मन में सवाल है, समझ नहीं आया हो कोई पॉइंट, प्लीज पूछिए. All of you got it? वैभव, वेदांत, महक, जानवी, आशीष, वेदांत, उमंग बाकर, उमंग खंडेलवाल, ऋषिक, एवरीवन, इशिता. आपको क्या नहीं आया बताइएगा, I'll explain. In case you have not understood it, please tell me, I'll repeat. All of you are able to get this? चलिए, इफ इट इज कंफर्टेबल, ठीक है, तो ये करते हैं अपन साथ में. ठीक है, चलिए साथ में करते हैं. देर आर 2 मिक्सचर्स ऑफ विस्की इन सोडा. सो मिक्सचर नंबर 1 एंड दिस इज मिक्सचर नंबर 2. दिस इज A and B. दैट इज व्हाट दे सेड. डोंट से M1 M2. ठीक है, A and B. दिस कंटेन्स, you can say 15% whiskey. When A and B are mixed in a certain ratio, the resultant contains 20% whiskey. ये सुनो, मतलब इसमें 15 है, इसमें 20 से ज़्यादा ही होगा. Now if we mix this 20% whiskey with a mixture of B in the same ratio as A and B were mixed, the resultant is 23 1/3. Okay, what is the ratio in which A and B are mixed and what is the strength of whiskey in B? Okay, है ना, मज़ेदार सा हो गया. अब आपको यहाँ पे पता नहीं है ये कितना है. ठीक है, सो वी नो दिस इज 20 minus 15 is 5 and this is x minus 20. इन दोनों को हमने क्या रेशियो में मिक्स किया होगा?
x माइनस 20 अपॉन 5 के रेशियो में मिक्स किया होगा. नाउ व्हेन आई एम मिक्सिंग दिस रिजल्टेंट पार्ट विच इज 20% वाला, ठीक है, दिस इज रिजल्टेंट, ठीक है, विथ बी विच इज हैविंग x परसेंटेज, इन दोनों को मिक्स करते हैं, सो वी गेट 23 1/3. ओके, ठीक है. सो इन दोनों को हमने क्या रेशियो में मिक्स करना चाहिए? यही रेशियो होना चाहिए. यस और नो? सो विच मीन्स यू कैन से x minus 20 upon 5 is equal to, you can say x minus 23.33 upon 23.33 minus 20, and that's what the value of x. Yes or no? चलिए जल्दी करके बताइए, what is the value of x? स्पीड में करके बताइए, what is the value of x? क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन समझे और फिर ये सॉल्व करें. I'm sure I'm required to explain this one more time. I'll explain, so don't worry about it. Give me answer to this question first. Weber says, why did you take the same ratio? Because it is mentioned. ठीक है Weber? Let me explain the question. Okay? चलो सब लोग क्वेश्चन देखो. There are two mixtures of whiskey and soda, A and B. This is A, this is B. ठीक है. Where A contains 15% of whiskey, ठीक है. When A and B are mixed in a certain ratio, the resultant contains 20%. So I don't know B में कितना है. So I took it as X. I take this as 15. दोनों को मिक्स करके I get 20%. तो मैंने दोनों को क्या रेशियो में मिक्स किया होगा? मैंने मिक्स किया होगा 20 minus 15 is 5, X minus 20, मतलब मैंने इन दोनों को इसी रेशियो में मिक्स किया होगा. Now वर्ड पे ध्यान दीजिएगा. Now if we mix this 20% whiskey वाला ये मिक्सचर with B in the same ratio as A and B, which is the same ratio, x minus 20 by 5, in the same ratio, अगर इन दोनों को मिक्स करते, then resultant would be 23 1/3. So this is 20%, this is x. इसको और इसको मैं मिक्स करता हूं कौन से रेशियो में? यही रेशियो में, which is what? x minus 20 by 5 is equal to this. Okay, is this comfortable? Great. So what is the value of x? Okay, what is the ratio in which A and B are mixed, and what is the strength of whiskey in B? So first find out the value of x. ठीक है. Weber says x is 30. Okay, ठीक है. चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 3.33 हो गया. So this is 1/3 of x minus 20/3 is equal to 5x minus 5 into 23.33. Okay, ठीक है. So this is nothing but 5 minus 1/3. Okay, so and ये इधर जाएगा. So 5 minus 1/3 कितना होगा? 15 minus 1, 14/3 of x, और ये हो जाएगा आपका 5 into 23.33 minus 20/3, and you get a value of x from this. Is that okay? Tell me fast, what is the value of x? बताइए सब लोग जल्दी. Rishik, what is your answer? Mehak, what is your answer? Ashish Mehta, what is your answer? Vedant, what is your answer?
Any one of you is facing a problem in terms of understanding a question? I'll repeat one more time. Don't worry about it, okay? I will repeat one more time. Any one of you is facing the problem of understanding the question? Please mention in the comment box so that I can understand. मैं समझ सकता हूं कि आपको प्रॉब्लम हुआ है. So I'll repeat one more time. So don't worry about it. Max says something around 23.56. Okay. I think no, 23.56 नहीं आएगा. Ishita, what is your answer? Bebo, are you sure your answer is, you can say 30? लुक्स ओके, यस 30 इज द आंसर, है ना, क्योंकि अगर 30 आंसर है तो ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका 2:1, और यहाँ पे अगर मैं 30 लगाऊंगा सो आई विल बी गेटिंग 6.66 एंड ये नीचे 3.33, सो विच इज 2:1, विच इज राइट आंसर. इशिता, व्हाट इज योर आंसर? Max says calculation mistake. Ashish Mehta, calculation mistake is there definitely. Vedant, did you get the answer? Rishik, did you get the answer? Very good, Vedant. 30 is the right answer. Rishik, did you get the answer? Say yes or no. Do I require to repeat this? Say yes or no. It seems the question is becoming challenging for large number of you. Speak something so that I can understand. If you are not going to speak up, it is not good. Okay. Here we go to next question. चलिए बताइए. What is the answer to this? I'm giving you 2 minutes. Your time starts now. आशीष मेहता इज गेटिंग 26. आशीष 26 नहीं आना चाहिए, 30 आएगा. 30 आएगा तो ये आंसर बनेगा.
Vaibhav says 1:4. Vaibhav took 1 minute. Last 25 seconds. Umang got 1:4. Very good, Umang. 10 seconds. Sanvi got 1:4. Very good, Sanvi. वेरी गुड, ज़्यादातर लोगों को आने लगा. वेरी गुड. चलिए, टाइम इज यू कैन से ओवर. वी स्टार्ट विद द मिक्सचर नंबर 1. मिक्सचर नंबर 2, इसमें मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है 2:3. इसमें 7:3 है और इनको मिक्स करेंगे. सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू 4:1. सो वी सेड वी कांट डू दिस. वी सेड 2/5. ठीक है, 7/10 and this is 4/5. These are the numbers what we should know. ओके, ठीक है. चलिए, बढ़िया. ठीक है. सो व्हाट डू वी डू इज 4/5 minus 2/5 is 2/5. 7/10 minus you can say और 4/5 minus 7/10 which is nothing but कितना होना चाहिए था 8 minus 7 which is 1/10. ओके, सो क्या रेशियो में होना चाहिए 1/10 is to 2/5. so that is nothing but 1:4 का रेशियो. Wonderful, very good. So I'm happy that many of you got this right. Great. We go to question number 8. जल्दी बताइए. Question number 8, you get 2 minutes. What is the answer? Fast. 1 minute is over actually. चलिए देखते हैं हाउ टू डू इट बिकॉज 2 minutes आर ओवर. यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम विच इज नॉट डन. हमारे पास तीन यू कैन से कंटेनर है. जार 1, जार 2, जार 3. इन जार 1 इट इज 2:3 का रेशियो, 4:7 का रेशियो, 5:3 का रेशियो. इन तीन को मिक्स करते हैं एंड वी गेट अ न्यू रेशियो. ओके, हाउ डू आई डू इट?
सो आई डू माई एवरेज वेट का तरीका, यस नो। तो यहाँ पे हमारा कितना लीटर है, 1, इसका 1 लीटर, इसका 1 लीटर, सबका 1 लीटर है। इसमें मिल्क कितना है, 2/5, इसमें 4/11, इसमें 5/8. Okay, so what do I get is 1 liter into 2/5 plus 1 liter into 4/11 plus 1 liter into 5/8 divided by total 1 plus 1 plus 1. So what do I get is milk upon total का ratio. Yes, this is what I am going to get, milk upon total का ratio, जहाँ से मैं you can say water is to milk का ratio निकाल सकता हूँ। चलिए देखते हैं, ठीक है। So basically this is 2/5 plus 4/11 plus 5/8 upon 3. LCM ले लेंगे 5 into 11 into 8, ठीक है। So what do I get is 88 into 2 is कितना होना चाहिए, 160, 176 plus 8 5 are 40 into 4 is 160 plus 5 into 55 is 5 5 are 250 and 250, that is 275, है ना, divided by 5 into 11 into 8 into 3. Okay, this is what I am going to get it, ठीक है। चलिए ग्रेट, बराबर है। वैभव आंसर चाहिए था वाटर इज टू मिल्क का रेशियो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सम करते हैं हम, 6 5 11, कैरी फॉरवर्ड 1, 7 7 2 14, 14 और 7 गुना 3 21, कैरी फॉरवर्ड 2 3 4 4 और 2 6 अपॉन 5 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 3. ओके, दिस इज हाउ दी कैलकुलेशन वुड बी. ओके, तो ये किसी से कटेगा नहीं. सो व्हाट डू वी गेट इज 611 डिवाइडेड बाई 8 5 are 40, 40 into 3 is 120, 120 into 11 is 1320. Okay, so this is 1320. This is what? This is milk upon total. I need water upon milk. What is the ratio I am interested in? Water upon milk. Okay, so water कितना होगा? 1320 minus 600. ओके, इज दैट ओके? यस. तो 600 करेंगे तो ये 720 होगा. 720 में से 11 चला गया तो दिस इज 709 अपॉन 611 इज द रेशियो. इज दिस ओके? समझ में आया? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू, यू कैन से मिल्क इन द फोर्थ जार. वाटर टू मिल्क will be in the ratio of 709 is to 611. समझ आया सबको? Is that okay? चलिए ग्रेट. We go to question number 9. जल्दी करके बताइए. You get 2 minutes. Very interesting question, very challenging question, not very easy. चलिए समझते हैं क्या दिया था. If there are 3 varieties of rice costing 8 rupees per kg, 13 rupees per kg and 20 rupees per kg are mixed, ठीक है, will be getting, you can say 18 rupees per kg का variety. What should be the ratio to of mixing them? दोस्तों इसको मिक्स करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है. कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई टेक 8 और 20 को मैं मिक्स करूं एंड आई शुड गेट 18. ओके, आई गेट 13 और 20 को मिक्स करूं और आई गेट 18. फिर इन दोनों को मैं मिक्स करूं, आई विल बी गेटिंग 18 इन वॉट एवर रेशियो आई मिक्स देम. Yes or no? In whatever ratio I will be mixing them, I will be getting 18 only.
Okay, so I will be getting lot of values, and there are lot of values which satisfy this issue. Okay, there are so many possibilities are there. Okay, हाँ, ये कितने तरीकों से बनेगा? देखिए, ये 18 माइनस 8 इज 10, 20 माइनस 18 इज 2. सो ये क्या क्या रेशियो में मिक्स करना चाहिए? दिस इज 1:5 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए. ठीक है, दिस इज 5 एंड दिस इज 2. सो इन दोनों को 2:5 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए. बराबर है, मतलब 8, 13 और 20 है. 8 और 20 को 1:20 के 1:5 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए, और 13:20 को 2:5 के रेशियो में मिक्स करना चाहिए. दिस इज द बेसिकली द आइडिया. बराबर है. सो बेसिकली एक तरीका हुआ 1:2:5. ये रेशियो में अगर मैं मिक्स करूं तो मेरा काम होना चाहिए. आपको चेक करना है, आप कर सकते हैं 1:8 प्लस यू कैन से 2:13 प्लस 5:20, है ना. दिस इज इक्वल टू आपका होना चाहिए 18. दिस इज पॉसिबल. ओके, पर हमेशा ध्यान रखें, दो नंबर है, दो को मिक्स कर रहे हो, यू गेट 1 रेशियो. 2 से ज्यादा है 3, यू गेट इनफाइनाइट वैल्यूज. ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. चलिए बढ़िया, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट. सो आपको याद होगा ये क्वेश्चन में हमने किया था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी इज गिवन एज a माइनस बी अपॉन a टू द पावर n. n इज वो जो रिप्लेसमेंट हो रहा है वो कितनी बार किया. व्हाट इज b? द क्वांटिटी रिप्लेस्ड. ओके, इज दिस कंफर्टेबल? चलो बढ़िया. सो यहाँ पे हमारे पास, हम जनरली जब ये फॉर्मूला करते हैं तो हमारा गणित क्या होता है कि इनिशियल क्वांटिटी वाज प्योर. अब यहाँ पे क्वांटिटी प्योर है नहीं. ठीक है, सो व्हाट डू वी नीड टू डू? वी हैव टू अप्लाई दैट इम्प्योरिटी. ओके, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:9 है. सो इसको हम इम्प्योरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस बिकम्स 4/13, है ना. 4:9 इज 4/13. सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट upon total quantity is given as, what is A? We don't know. What is B? 5. What is A? We don't know. Process कितनी बार किया गया? 2 बार into 4/13. Now when you don't know what is the initial value, आपका ये 4:9 वाला जो पार्ट है उसमें इनिशियल क्वांटिटी कितनी है that you don't know, so thereby you can't get anything out of it. Okay, if they start putting value of A is equal to 20 or A equal to 30 or A equal to 50, you get different values. Yes or no? Is this clear to you? ये बात समझ में आ रही है आपको? Say yes or no. Is this comfortable for you or not? Say yes or no. This is crucial for me to, you can say, help you understand these two concepts. है ना, ये क्या वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है. यहाँ पे 3 चीजों का मिक्स हो रहा है. Yes or no? 3 चीज का मिक्स होने के लिए there are so many ways possible. Okay, there are so many ways possible. Similarly, यहाँ पे you need value of A. So when you don't know what is value of A, you can't get an answer. But if you know the value of A, you can get the answer. Comfortable है? Very good. चलिए, ठीक है. Now here comes question number 11. ठीक है, सेम तरीके का है, ध्यान रखें. We have 40 liter of cask containing milk and water in the ratio 4:9. 40 liter बोल दिया है. 5 liters of this solution is taken out and replaced with 5 liter of water. Now 8 liters of solution is taken out and replaced with water. Finally 10 liter is taken out and replaced with water. What is the final amount? आपको याद होगा हमने अभी देखा था quantity of milk left upon total quantity that is given as
a माइनस बी अपॉन a टू द पावर n। हमारा एजम्पशन ये था कि हर बार हम सेम क्वांटिटी निकालते हैं, सेम क्वांटिटी रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और फिर हमने साथ में देखा था इम्प्योरिटी भी लगा सकते हो। यहाँ पे 4:9 है, हमने इनिशियली एज्यूम किया था ये तो प्योर चीज के लिए, तो आप यहाँ पे 4/13 का इम्प्योरिटी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। पर अगर हर बार क्वांटिटी अलग अलग निकलती है, सो क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी दैट इज गिवन एज a minus b upon a into a minus c upon a into a minus d upon a into impurity, which is 4/13. In our case, it is 40 minus 5/40 into 40 minus 8/40 into 40 minus 10/40 into 4/13. Is this clear to everyone? Now, these are the special cases for the formula. Okay, keep in mind that you are not missing out on these concepts. ये ऐसे concepts है जो आपको पक्का एग्जाम में आएंगे और ये आपको कंफ्यूज करेंगे. Is this very clear to everyone? सबको बात समझ में आ रही है? Say yes or no. ये जो मैं impurity multiply करता हूं, ठीक है, that you should know. ओके, और फिर हर बार मैं अलग अलग वैल्यू रिप्लेस करता हूं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा ये आपको पता होना चाहिए. Is this clear to everyone? Say yes or no. आशीष बोलता है नहीं. आशीष क्या समझ में नहीं आया बताइए. आशीष क्या समझ में नहीं आया अच्छे से लिखिए, so that I can understand what is the problem you are facing, so I can change my communication. इशिता, वैभव, महक, सानवी, उमंग, वेदांत, सबको समझ आया? आशीष बोलते सर ये लास्ट में. आशीष पूरा लिखिए, क्या नहीं समझ में आया? आशीष ये फॉर्मूला आपको पता है, दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी इज गिवन बाय a माइनस बी बाई a टू द पावर n. वैभव बोलते सर वाई डू टू टेक 4/13, है ना. ये देखो मिल्क एंड वाटर इनिशियली जो 40 लीटर था, हमारा ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उस फॉर्मूला के अंदर वी डोंट कीप this 4/13. क्यों? We assume that it is pure milk. Okay, so we don't multiply. But when you have initially, you don't have a pure milk. You have a kind of impurity. So you multiply 4/13. 4/9 था, that is 4:9, that is milk upon water था. So we have to convert that into milk upon total. So thereby we multiply by 4/13. Is this comfortable? Vaibhav? कंफर्टेबल है? वेरी गुड. चलिए, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चंस है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, ठीक है. दैट्स इट. यस, दिस आर द होमवर्क क्वेश्चन. 3 क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, ठीक है. 3 क्वेश्चन. अभी हमने कंसेप्ट सीखा था, वही कंसेप्ट के ऊपर 3 क्वेश्चन है. प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एंड दैट्स वेयर यू कैन से दिस मिक्सचर एलिगेशन का फंडामेंटल इज व्हाट वी आर क्लोजिंग. दिस इज अ सेकेंड सेशन. I believe you need practice. How do you get the practice? The courses के अंदर, है ना, आपके कोर्स के अंदर courses.protalentdigital.com साइट के ऊपर you have cohort 1. ओके, उस कोहॉर्ट 1 में मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के, है ना, 2 एक्सरसाइजेस देके रखी है. मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के आज उसको खत्म कर लीजिए. इफ यू हैव डाउट्स प्लीज आस्क मी इन द कमिंग फ्यू डेज. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट. ओके, ठीक है. चलिए, ग्रेट. सो आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. आई होप वी कुड अंडरस्टैंड दिस वंडरफुल टॉपिक. ईजी नहीं है बट बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है.
बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड पार्ट है, आप आसानी से कर पाओगे. ओके, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस मॉड्यूल. थैंक यू very much for coming here and watching this. Don't miss out to like this video, subscribe to our channel, and tell to large number of people to be part of ProTalent. Okay, thank you. Have a good day.